मिडंसा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने देख के लिया होगा कि क्या चल रहा है पीछे। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट यू गाइस। आपको स्टोरी वोरी सब मैं आराम से फुर्सत से बताऊंगी, बट यस, आई एम मूविंग out of my first home in Canada, in Vancouver, and I am packing right now. So yeah, that's what's happening. For it will be a shock to everyone, to be honest. Other than my parents, nobody knows. My friends don't know, nor anyone else. No one knows. So yeah, I've just started emptying my closet right now. I'm just keeping initial things. The thing is, today is 28th, and on 30th of April I am moving, and I have to like go out on Monday and Tuesdays. So I'm gonna keep the outfits out for those 2 days, and for the then all the rest of my outfits I'm gonna pack. I have to also empty my kitchen, so I'm doing that after preparing food today. So I guess almost everything is done. I've just put all the clothes over here. That's my roommate's bed, but yeah, she's gone to college, so I have the room to myself, and that is why I am doing it right now. I'm gonna give you guys a detailed update on that, on everything. But yeah, it's happening. It's happening too early, to be honest. I did not think this is going to happen now, but जो जब होना होता है वो होता ही है. No one can stop things from happening. So there are a lot of things, guys. I cannot find my second phone also. I don't know where I have put it right now. Oh god, I was so stressed, but then I was like, I wanted to put some music and do these things, but then I was so stressed and everything. I just thought I'll find it when I'm going to empty most of the things. So let me just start like with my own mind. Let's not listen to music, let's talk to ourselves and start the work. So that's what I'm doing. I have emptied half of the things. I have to go to the kitchen right now. It's 1 o'clock, so I'm going to go prepare my lunch. By that time I'll get an idea on what are the things in the kitchen that I can pack, because those I'm putting in the bag only. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिटी छोड़ के जा रही हूँ, राइट, एक घर से दूसरे घर ही जा रही हूँ, तो बैग वैग में डाल देंगे खाने पीने का और किचन का आइटम्स, बाकी सब अपने सूटकेसेस में पैक कर लेंगे. वैसे भी मेरे सारे सूटकेसेस पैक्ड भी थे. The thing is, I've never unpacked my suitcases other than the winter stuff, right? And अभी भी समर पूरी तरह से आया नहीं है. थोड़ा थोड़ा तो स्प्रिंग आया था, 2 हफ्ते के लिए धूप थी, अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है. सो इट्स स्टिल रेनिंग राइट नाउ. दिस वीक इज गोइंग टू बी रेनी. That is what they have told, and there is 1 more week left for my spring break. So luckily जो भी होना था मेरे spring break के टाइम पे हो गया, तो मुझे पढ़ाई का टेंशन नहीं है अभी, तो मैं आराम से सब कुछ कर सकती हूँ, टाइम है मेरे पास. तो चलो, what we are gonna do now is go to the kitchen and make some lunch, and I'm gonna take you guys along. I'm gonna show you how my things are there in the kitchen, which I have to arrange. And just ignore my face, you guys. I don't know what has happened achanak se from past 2 days. Everything is like let's go, let's prepare some lunch. So this is my lunch, guys, that is ready. There I keep my onions and potatoes outside in the basket. This is where my vessels are there, and the drawer down has all my groceries and stuff that I have to empty. So this is all the things that are in the kitchen that I have to like pack. हेलो गाइस, तो आप लोगों ने किचन का देख लिया ना, तो वो सब लेके आना है मुझे. आई हैव नॉट डन इट. मैं थोड़े मसाले वसाले के पैकेट्स जो अभी भी बंद थे, जो मैंने खोले नहीं थे, जो वहाँ रखे थे, वो सब ला के आके मैंने डाल दिया. तो इफ़ यू सी, मेरे ये और ये दोनों बैग्स फुल हो चुके हैं. सब कुछ मैंने डाल दिया है. और ये जो भरना स्टार्ट किया था ना, इसमें उस साइड में अभी जगह है और ऊपर जगह है थोड़ी सी. हम सीइंग की उधर मैं क्या डाल सकती हूँ, ऑब्वियसली किचन का थोड़े बर्तन डालूंगी. एंड देन मेरा क्लोजेट मेरी साइड पूरी खाली कर दी है. सिर्फ नीचे मेरा थोड़ा सा सामान है, वो घर के कपड़े हैं, वो मैं लास्ट मिनट में बैक पैक में डालने का सोच रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ डन. बस ये जो मेरा पसारा इधर फैला हुआ रहता है ना, ये पूरे इधर तक मेरा है. नहीं, इधर नहीं, उधर तक मेरा है. उधर उधर यार, मेरा फिंगर भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बट या वट एवर यू सी ओवर देयर,
till here everything is mine. So that thing I have to like sort, but that also last minute before going I'm putting, because it is mainly my skincare makeup. जो ग्लास की बॉटल हैं तो मैं उसको ख़राब नहीं कर सकती, तो वो मैं हैंड बैग वगैरह में डालूँगी और बैक पैक में डालूँगी, तो ऐसे डालेंगे। अभी देखते हैं कैसे होता है। आज का मेरा हो गया बस, अभी और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। रात को मोस्टली मैं बर्तन सॉर्ट करूँगी, देखूँगी तब का, बट मोस्टली हो गया है। आज संडे है 28, कल मुझे बाहर जाना है, ऑलरेडी मेरा प्लान है, तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू टेक ओवर देयर। एंड मोस्टली आपको इस व्लॉग में एम्प्टी न्यू हाउस टूर देखने को मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। मोस्टली आपको एम्प्टी न्यू हाउस टूर देखने को ज़रूर मिलेगा इस व्लॉग में। एंड देन उसको हम अच्छे से एक एक करके अच्छे से सॉर्ट करेंगे, एंड देन अपना घर बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। ऑब्वियसली यू विल कीप ऑन सीइंग इन ईच एंड एवरी व्लॉग ऑफ माइन दैट थिंग ऑल्सो। तो या, तो लेट मी कैच अप विद यू लेटर व्हेन आई एम going to do something else. Now I'm going to take some break, you guys. Hello guys, तो हो गया पूरा एक दिन। अभी होगी अगले दिन की शाम। इट इज़ मंडे इवनिंग राइट नाउ, एंड आप रूम की हालत तो देख ही रहे हो, पूरा ऐसे मैसी पड़ा है मेरा बेड। मैंने अभी जस्ट कंफर्टर वॉश किया मेरा, एंड मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पैकिंग करने का, बट यार इतना आलस आ रहा है, आपको क्या बताऊं। बट यस, कल मूव आउट होना ही है, तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अभी मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, एंड मैं बहुत बिजी चल रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो वो मैं आपको नए घर में जाके ही बताऊंगी क्यों इतनी बिजी हूँ। कल मेरे पास टाइम नहीं है पैकिंग करने का, मैं घर पे नहीं हूँ, तो मुझे अभी करनी पड़ेगी। सॉरी, मेरी रूममेट नहाने गई है, तो आपको बाथरूम का साउंड आ रहा होगा। बट या, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले मेरे स्टडी टेबल से। यहाँ पे जो भी मेरा सामान है वो सब मैं अपने बैकपैक में पैक करूँगी। कल बाहर जाने के वक्त मैं हैंड बैग ही कैरी करने वाली हूँ, तो मेरे बैकपैक खाली रहेंगे। सो आई एम गोइंग टू पैक एवरीथिंग इन दैट, एंड देन जो भी मेरे घर के कपड़े बाकी थे वो सब मैं भर दूंगी। सिर्फ आज रात पहनने के लिए एक निकाला हुआ है वही रखूँगी। फिर जो कपड़े वॉश किए थे उनको भी पैक करके एक और सूटकेस भी मैं भर दूंगी। एंड देन माई रूममेट बॉट कार्टन्स ऑल्सो फ्रॉम अ वर्क प्लेस, तो उसमें हम लोग किचन का आइटम्स भरेंगे। तो मुझे अपना किचन आज ही खाली करना पड़ेगा, लाइक मेरे ड्रॉर्स एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको कल दिखाया था। तो पहले हम सॉर्ट करेंगे द स्टडी टेबल एंड द क्लोथ्स। वंस दैट इज सॉर्टेड विल गो एंड फिनिश द किचन, एंड वंस किचन इज डन ओनली द लास्ट थिंग विल रिमेन विच इज़ ऑल द स्किन केयर स्टफ ऑफ माइन। तो उसको हम लास्ट में डाल देंगे, किधर भी डाल के उसको लेके जा सकते हैं। फिर सब्जियां वब्जियां भी, फ्रिज का सामान, वो भी लास्ट में बैग में डाल देंगे। तो कल मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा दिन बिजी है मेरा, तो मैं दोपहर तक तो आ ही जाऊंगी। तो दैट टाइम विल डू ऑल दैट। सो या, मैं अभी तक बैठी थी। मैंने डिनर भी आज जल्दी कर लिया। इट इज़ जस्ट 8:30 राइट नाउ, और मैंने 7:30 को ही डिनर भी कर लिया था। तो लाइक आई कैन शो यू गाइस, हमारा 8:30 देखो, सॉरी, हाँ ये हमारा 8:30 आपको दिख रहा है बाहर, लाइक लिटरली उजाला है बाहर। दैट इज़ द 8:30 हियर इन समर्स यू गाइस। सनसेट हो चुका है, बट या इट इज़ क्लाउडी एंड इट इज़ गेटिंग डार्कर राइट नाउ। तो या, लेट्स गेट सॉर्टेड, लेट्स वर्क वन बाय वन। Hello guys, I am back, and my roommate, being a sweet roommate, she's helping me do the packing. She's like, instead of doing the important work, you're doing nonsense. But yeah, if I haven't told you, she's also coming with me, don't worry. There is a long story for all this which I'll tell you guys later. But yeah, let me just finish all my kitchen wrapping. I'm wrapping my kitchen right now. So once I'm done from all these places and go to the room, I'll catch up. Hello guys, तो हो गई है हमारी पैकिंग पूरी ख़त्म। हमने अभी बस झाड़ू मारा है पूरे रूम में। ये सब हमारा सामान है guys। हम लिटरली एक ही रूम में रहते थे और बाकी का सब बस किचन आइटम्स। आई डोंट नो हाउ इज इट सो मेनी थिंग्स। एक्चुअली दिस बॉक्सेस आर टू टाइनी, इसकी वजह से 3-4 बॉक्सेस हो चुके हैं। मेरी रूममेट 8 बॉक्सेस लेके आई थी अपने काम के उधर से, एंड सारे के सारे 8 बॉक्सेस फुल होने वाले हैं। अभी लास्ट में हमें सिर्फ बाथरूम का थोड़ा आइटम्स रखना है अलग बॉक्स में। अदर देन दैट येस, एवरीथिंग इज ओवर हियर। माई बेड, दिस इज हर बेड एंड स्टफ। झाड़ू लगाना था तो सब ऊपर डाल दिया। And the tenant who is actually staying there will vacate by 9 PM today.
तो हम उसके बाद जा रहे हैं क्योंकि मेरे रूममेट को कल काम है और कल हम शिफ्टिंग करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो हम आज रात को ही जाके ना एटलीस्ट डंप कर देंगे घर में। फिर हम लोग आराम से जब छुट्टी होगा तब अनपैक कर लेंगे आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा जैसे ज़रूरत पड़े वैसे। दैट इज़ द प्लान यू गाइस। ओ माई गॉड, आपको अभी भी स्टोरी टेलिंग करना बाकी है, वो मैं फुर्सत से करूँगी, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा फुर्सत से, क्योंकि वो ऐसी स्टोरी है कि मैं भूल भी नहीं सकती, तो बताना ही पड़ेगा। तो चलो फिर आई गेस आई विल कैच अप विद यू गाइस वंस आई एम देयर। दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर द व्लॉग अदर देन द स्टोरी टेलिंग एंड द न्यू हाउस टूर जो मैं आपको देने वाली हूँ। तो या टाडा, टेक, थैंक यू। Oh, welcome home. Guys, our landowner kept this for us. So sweet of her. And this is our Chintusa little kitchen. And that is the entrance. And this is the Chintusa little room, you guys. That's the closet. And that's me. ओके, आई मीन इतना भी चिंटू नहीं है बट चिंटू ही है। हमारा प्राइवेट हाउस है गाइस, ये प्राइवेट हाउस समझ रहे हो आप। एंड देन दिस इज़ आवर बाथरूम। एंड लाइट्स किधर है ब्रो, बाहर ही है क्या? दिस इज़ आवर बाथरूम, टॉयलेट, हैंड वॉश। Okay, now I'm going to unload everything. I don't want to piss anyone because everyone is coming to help us over here. We're doing so much mehnat, but yeah, it looks so good. Hi guys. I know मेरा हाउस टूर का वीडियो बहुत छोटू सा आया है, बकवास सा, उसके लिए सॉरी। मैं हमारा सेटअप होने के बाद अच्छा वीडियो बनाऊंगी। अभी अपना हॉल की हालत देखो, लिटरली ये हमारा हॉल है, अभी पूरा सामान से भरा पड़ा है। ओके, और ये और यहाँ पे किचन का सब कुछ। मेरी रूममेट उसकी फैमिली से बात कर रही है। एंड सॉरी फॉर बीइंग सो लो, क्योंकि हमारे ओनर लोग यहीं ऊपर रहते हैं ना अभी, एंड इट्स ऑलरेडी 10:30, सो यू शुडंट टॉक लाउडली ओवर हियर। बट मेरे पास यहाँ बहुत अच्छी स्पेस है इस वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनी नहीं रही। Okay, so yeah, once I set up nicely you will get to see my house more in the next few vlogs, but इसके लिए इतना ही। storytelling I'll be adding at the end, so stay tuned for that. Hi guys, I know I've been keeping the suspense for the entire video, and if you guys have like just clicked to the end of the video by the first place where I'm telling I'm gonna tell the story at the end, or by seeing the title of the story, then yes, this is the story time. So I can't give all the clearly like the details kind of thing obviously, but I'll just tell you what happened and why that thing led us to empty our house before the contract actually ended. As the last video you saw, just I spoke to my mom and I cut the call, and I wanted to upload a photo, so I was just on my Instagram and I was editing my pictures and I was searching for a caption and stuff, and I just hear this loud bang. I thought it was from the upstairs, and I was shaken at once. And then what happened was I just hear this screaming, loud screaming. It was like screeching, okay? It was so bad. I started shivering. I was like, what the hell is happening right now? And I realized it is coming from the side door, I mean from the neighboring bedroom, and I was not sure if I should lock my door or I should unlock and go out. And I don't know, if it was the Rachel like 2-3 years back, she would literally lock herself and be like, from inside she would scream and ask what's happening. But I was brave enough. I opened my door and I stepped out, and I just saw that the bedroom, like the guy in that room was just screaming badly. And luckily his roommate was inside, and his roommate just told us that he got something. Oh god, I don't know how to describe this thing, like what happened to him. He was frustrated for many days and something he was feeling, and just burst out that day and he started screaming. He just wanted to, like, I don't know what he wanted to do with himself, or
people around him. So the guy, his roommate, since he was there, luckily he just wrestled and held him down on the bed so that he doesn't do anything bad. And the other guy was also there in the room, the third bedroom guy, and he also came out, and we both are freaking out. He just peeked inside and he was like, okay, that guy has been holding him down, but the way he gave me the reaction, I was like super scared what is happening. And later we had no other person who could like help the guy to handle him, because they were out, my roommate was out, so there was no one, and I was super scared to go inside the room. So the only option we had to was call 911, and that is what we did. We called 911, and I was on the phone giving them directions. They ask a lot of questions, you guys. They should just shut up and come to the location. But they ask a lot of details, the address, the name. I didn't even know the name and age of the person. I mean, I knew the first name, but they asked for the full name, the age, and how is the situation inside. You should tell me what exactly they are doing, like what does it look like. And I'm scared to go to that door itself. So I have passed the phone to the other guy who actually saw what the situation was, and then he explained, and they came quickly. They came in 15 to 17 minutes exactly, I guess. And then yeah, they came, and then we were a bit calm, and they handled the situation. They took him to the hospital, and luckily he has some relatives over here. The guy who got this attack, like the panic attack or the frustration, was let out. I don't know how to name it. And yes, his relatives were informed and he's being handled. But then the neighbors don't like the police to be called here in Canada. It's like the neighbors complained to the owner, and it doesn't look good on the tenant side as well, right? So yes, because of that, what happened was, I'm so sorry, I'm getting lost. So yeah, so because of that, what happened was, next day the agent through whom this house was like given to us came, and they indirectly told us that either we might have to vacate the house, or there will be a lot of damages and costs that we will have to bear and all. So then we all were so scared to even live in that locality. We didn't know when he'll be released, when he might come back, or what might happen. So we decided on the next day that we will be vacating, and we started finding new places, and then we finally found this one. And that is how the entire thing turned out. But it turned out to be good for me and my roommate. At least we are in a good place, in a safe place right now, and we are far from there. Oh well, the 10 days after that situation happened, we had to walk in that area. Sometimes we would come back late from like outside. I was in my spring break, still I used to go out to distribute resumes and stuff, right? It was like scary thing to keep the door unlocked as well. Before we used to keep the door unlocked during the day, but now no, we used to lock every time. We used to take our keys every time. So yeah, that was like a PTSD moment, like that. It was like, oh, is someone coming, is someone happening, something happening, kind of fear. But yeah, everything is settled now. That person is also well. He's gone back to his home at this point. I don't know if he'll return back to continue his education, what not, no idea right now. But yeah, that was the thing, you guys. That is why we were partially evicted, and we also decided that we don't want to stay in that place anymore. And the reason the 911 was called, because we couldn't handle the situation. It was getting worse and worse. He was not trying to calm down at all. He was not coming back to his senses. So yeah, we had to take help. So yeah, that is the story, you guys. And thank you so much for staying till the end of this vlog. And I hope you like this new place I'm staying at. Let me know how do you like the house. And if you have any suggestions, we already have set up this house, if you can see from my background, and you will see that in the next vlog as well. But yeah, you can still give me your suggestions if you have any, because this is a little small place, to be honest, but it is like good for 2 people. It's not too not like there are more people staying, right? So for 2 people, it's a very decent and very nice place. Obviously when the furniture comes, it looks very small, but I have given you the empty house tour, and I know it is looking like huge and comfy over here. So that was it. I hope you liked watching this vlog, and if you liked watching it, please do like and share. And if you want any details about how I found the house, or any other details about anything else, I know a lot of them are seeing my vlog right now. Like I get notifications about the first time I came to Canada, or my travel vlogs, my packing vlogs and stuff. There are people who have seen them. I get notifications that are
vlogs that have been watched more. So yes, I hope this vlog also will be helpful about moving and stuff. So do let me know if you want to know anything, and ऐसे ही मजेदार vlogs देखने के लिए do subscribe to my channel. Bye bye.